वेलकम टू अपर्णाज क्लासेस। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। In this video, we will see the solution of Model Paper 2 of Jackboard and the subject is Biology. This is the part 1 of the solution of the Model Paper 2. Once again, we are here with the model question paper. This time, this is the set 2 of model question paper of subject biology. In this video, we will solve the objective type question, which contains MCQ type questions and the fill in the blanks. Both the type of question carrying 1 marks for each question. तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ग्रुप ए में, जिसमें है MCQ टाइप क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, द innermost layer of microsporangia which nourishes the developing pollen grain is, options are sporogenous tissue, filament, tapetum and intine. The correct answer is tapetum. The correct answer, tapetum. Next question, how many pairs of contrasting character of pea plant did Mendel select for his experiment? Options are 14 pairs, 2 pairs, 1 pair and 7 pair. The correct answer is 7 pair. Question number 3. During the life cycle of Plasmodium, sexual reproduction takes place in which of the following host? Options are human, female Anopheles mosquito, male Anopheles mosquito, and option D is both A and B. The correct answer will be the female Anopheles mosquito. This is the correct answer. Now the question number 4. Question number 4. At which stage of life is oogenesis initiated in a human female? The options are at puberty, during menarche, during menopause, and during embryonic development. The correct option is during embryonic development. Question number 5. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at, options are S phase, G phase, G2 phase, and G0 phase. Correct answer is S phase. Question number 6. The common cold is caused by, options are rhinovirus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhimurium, or the Plasmodium vivax. Correct answer is rhinovirus. Question number 7. Which of the following is an example of restriction endonuclease? Options are E. coli, Hind2, DNA, and none of this. Correct answer is Hind2. The question number 8. Basic unit of ecological hierarchy. Options are individual, population, community, and ecosystem. The answer will be, the correct answer is individual. Question number 9. DDT residues are rapidly passed through the food chain causing biomagnification because DDT is. Options are water soluble, lipid soluble, moderately toxic, and non-toxic to aquatic animals. The correct answer is, it is lipid soluble. Question number 10. Copper ions released from copper releasing intrauterine devices, यानी कि IUDs. Options are makes uterus unsuitable for implantation, increase phagocytosis of sperm,
suppress sperm motility, and option D is prevent ovulation. The correct answer is makes uterus unsuitable for implantation, यानी कि ऑप्शन ए. Question number 11. The part of gynoecium that determines the compatible nature of pollen is options are stigma, style, ovary and synergids. Correct answer is stigma. The question number 12. Which of the following crosses will give tall and dwarf plants in same proportion? Option 1. Homozygous tall plant crossed with homozygous recessive plant. Option B. Heterozygous tall plant crossed with homozygous recessive plant. Option C. Homozygous tall plant crossed with heterozygous tall plant. Option D. Heterozygous tall plant crossed with heterozygous tall plant. Correct answer is B, that is the capital T small t crossed with small t small t. The question number 13. In a DNA strand, the nucleotides are linked together by options are glycosidic bond, phosphodiester bond, peptide bond and hydrogen bond. Correct answer is hydrogen bond. Question number 14. Which of the following is not a cause of transmission of HIV? Options are multiple sexual partners, sharing infected needles, mosquito bite, and fourth one is transfusion of contaminated blood. Question is which is not a cause of transmission of HIV? Then the answer is mosquito bite, यानी कि मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है. तो correct answer will be the C, mosquito bite. Question number 15. Question number 15. There is a comparison. RNA, chemically RNA is dash reactive and dash stable than DNA. There are the different types of option. अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ब्लैंक में इक्वली लगेगा, लेस लगेगा, मोर लगेगा, या सेकंड ऑप्शन में इक्वली लगेगा, मोर लगेगा, लेस लगेगा. तो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए एक्चुअल आंसर ये होगा केमिकली आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल देन डीएनए. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले में मोर और सेकंड में लेस हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में. तो आंसर विल बी द सी, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं. The addictive chemical present in tobacco is options are caffeine, nicotine, catechol and the carbon monoxide. Correct answer is nicotine. The question number 17. 17 is which of the following is a process used for amplification or multiplication of DNA in DNA fingerprinting? Options are southern blotting, northern blotting, polymerase chain reaction and none of this. The correct answer is polymerase chain reaction. That means the PCR. यानी कि डीएनए के सेगमेंट को एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है? दैट इज द पीसीआर और द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. Question number 18. Organisms show migration in order to avoid unfavorable condition of which factor?
यानी कि इनमें से कौन से कारण के लिए ऑर्गेनिज्म एक जगह से, प्राणी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो ऑप्शंस आर टेम्परेचर, फूड अनअवेलेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी। कहने का मतलब कि इनमें से कोई भी फैक्टर जिम्मेदार हो सकता है किसी भी प्राणी के माइग्रेशन का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। Now the question number 19. Which of the following is the way to control vehicular air pollution in Indian cities? Option A, use of unleaded petrol. Option B, use of catalytic converter in the vehicles. Option C, use of CNG as fuel. And option D, all of this. The correct option will be the all of this. यानी कि इनमें से सब मेथड अपनाए जाते हैं भारतीय शहरों में पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20. XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of. किसमें पाया जाता है या ये किसका एग्जाम्पल है? फीमेल हेटेरोगैमेट, मेल होमोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी, एंड डी बोथ बी एंड सी। ये XO और XY ये दोनों मेल में पाए जाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसेक्ट में। इसमें मेल में पाया जा रहा है दो सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के, और ये जब गैमेट बनाते हैं तो दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनाएंगे। किसी में X भेजेंगे तो किसी में Y जाएगा। ठीक उसी तरह से इंसेक्ट्स में किसी में X जाएगा, किसी में O जाएगा। तो इस तरह से मेल जब दो तरह के गैमेट बनाते हैं तो उसे हम हेट्रोगैमेटी कहते हैं। तो ये चलते इसका आंसर होगा मेल हेट्रोगैमेट, यानी कि मेरा ऑप्शन सी, दिस इज द मेल हेट्रोगैमेट, इट इज द करेक्ट आंसर। Now we will see the group B, which contains the fill in the blanks, रिक्त स्थान की पूर्ति। Each question will carry 1 marks. तो यहाँ एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, जिस हेल्प बॉक्स के वर्ड्स के सहारे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, उसका आंसर इसी में है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, DNA fragments can be joined together using dash. The answer will be the DNA ligase. Now the next question is 22. ELISA is based on the principle of dash interaction. The answer is antigen antibody. That means ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. Question number 23. That is a dash cell of pollen grain divides to form 2 male gametes. The answer is generative cells. Hence, generative cells of pollen grain divides to form 2 male gametes. Question number 24. Rheumatoid arthritis is an dash disease. Rheumatoid arthritis is an dash disease. The answer is autoimmune. That means rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Question number 25. Dash burns more efficiently as compared to petrol and diesel. The answer is CNG. That means CNG burns more efficiently as compared to petrol and diesel. Question number 26. Dash is the site of DNA molecule at which RNA polymerase binds during transcription. यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल में वो साइट जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, यानी कि ज्वाइन करता है या वहां पे अटैच होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। द आंसर इज द प्रोमोटर, यानी कि प्रोमोटर वो साइट है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होता है। The promoter is the site of DNA molecule at which RNA polymerase bind during transcription. Question number 27.
The outermost layer of blastocyst is called as, यानी ब्लास्टोसिस्ट के outermost layer को क्या कहा जाता है? The answer is trophoblast. The answer will be the trophoblast. यानी कि the outermost layer of blastocyst is called as trophoblast. Thank you for watching the solution of Biology Model Paper 2. This is the part 1 of JAG Board 2021. Please subscribe the channel and like the video.